Another day, another attempt by China to lay claim on Indian territory and another befitting reply by the Indian government. After China gave new Chinese names to 30 locations across Arunachal Pradesh, here's how External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar responded. कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? अरुणाचल प्रदेश भारत का स्टेट है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ये नाम बदलने से कुछ नहीं होता। और ये लद्दाख का विषय जो है, नहीं एक्टिविस्ट होते हैं, अब एक्टिविस्ट के अपने विचार होते हैं। आप सब जानते हैं कि हमारी सेना जो है वो सीमा पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन करने में हमारी सेना जो है वहां डिप्लॉय हो चुकी है। Now, India has rejected what it calls the senseless attempts by China to rename places in Arunachal Pradesh. In a statement, the External Affairs Ministry stated that assigning invented names will not alter the reality that Arunachal Pradesh is, has been, and will always be an integral and inalienable part of India. Remember, China calls Arunachal as Zaglan, and it claims Arunachal as part of South Tibet. China had released the first such list of 6 places in 2017. The second one of 15 places was issued in 2021, and the third list with the names of 11 places was released back in 2023. Clearly, this reassertion of claims by China also comes a few weeks after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Sela Tunnel, built at an altitude of 13,000 feet, strengthening the infrastructure of Arunachal Pradesh. But the big question we're asking on Nation Tonight is, beyond words, how worried should India be about China's vicious expansionist policy? What strategy should India adopt to counter China at the border regions? And what role can a region like Tibet and countries like US play in the Indo-Sino relations? On Nation Tonight, I'm joined by Pathikrit Pain, Geo-Political Analyst. I'm also joined by Ravishankar Ravi, Editor, Dainik Purvodaya. Good evening and namaskar to both of you. Pathikrit, let me start with you. What do you make of this, Pathikrit? You know, this is not the first time that China has done this. Very notoriously, it's given new names, new Chinese names to locations across a part which is ours, which is India's. Sure. First of all, this is part of Chinese psyops, and they keep on doing it. And it is also part of China's what is called the 5-finger of Tibet policy, and under which they have kept on needling and claiming places of Arunachal, Bhutan, Sikkim, Nepal, and Ladakh. The problem with China today is that this is something they have tried in the South China Sea also, but India is the only country which has severely resisted and completely countered the Chinese games. Today, if you go to the border areas, you have a man-for-man deployment. There's a machine-for-machine deployment, and there's a major military level border infrastructure which has been built up. So China knows that, yes, beyond these small skirmishes which can happen at places, it is very difficult for them to do something which they could have done in any other place, or the way they tried to overwhelm Taiwan. I also want to mention it that the Chinese also know, and it has been said by somebody very senior in the government, that what may start in Ladakh may not end in Ladakh. The Chinese know the kind of deployment India today has in the Andaman Nicobar Island, whether it's the BrahMos, which was recently tested, or the Harpoon armed Jaguar fighters, or the PHI Poseidon, which can choke the Malacca Strait, which is the lifeline of Chinese trade. 90% of trade goes through that region. Yes, China is an issue. There is no denial. It is a cause of concern. It is no denial. There's no denial. But should we completely be worried and lose our sleep? Absolutely not. China might be a much bigger economy than ours, but China has far more number of adversaries than what we have. The kind of deployment that you see over there, the kind of efforts being made by government of India as part of vibrant village policy, under which in 46 blocks in 19 districts of border regions of Arunachal, Sikkim, Uttarakhand, we'll come Ladakh, to and the government Himachal, initiatives later, Pathikrit. Let me get in Ravishankar Ravi into this. रविशंकर जी, ये पहली बार नहीं है जब चाइना ने ऐसी लिस्ट निकाली है जहां अरुणाचल में डिफरेंट लोकेशंस के चाइनीज नाम दिए गए हैं, बट क्या रिस्पांस होता है नॉर्थ ईस्ट में? दैनिक पूर्वोदय न्यूज़पेपर बेस्ड है नॉर्थ ईस्ट में,
क्या रिस्पॉन्स रहता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों का, अरुणाचल के लोगों का, जब चाइना उनकी जगहों के नाम अपने नाम रख देती है? श्रेया, संयोग ये है कि लास्ट वीक मैं अरुणाचल प्रदेश में था और वहाँ के अलग अलग ट्राइब के लोगों की एक मीटिंग थी, उसमें मैं गया। और हाँ, मुझे याद आ रहा, जोया तसुम मोयोंग पासीघाट की एक महिला थी, जो पासीघाट से बहुत दूर नहीं है अरुणाचल का बॉर्डर। और वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि वो तो बल्कि ये भी कह रही थी कि भारत भारत भारत। और सबसे अच्छी बात ये है कि अरुणाचल प्रदेश के लोग अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करते हैं। और जब चाइना इस तरह की हरकत करता है तो लोग हंसते हैं, क्योंकि मन भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो चीन की सीमा से सटा हुआ है। बावजूद इसके वहां के लोग पूरी तरह से अपने आप को भारतीय होने पर गर्व करते हैं। उनमें कोई रोष नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और बल्कि वो हमारी सेना को, कई ऐसे इलाके होते हैं दूर दराज के गांव के इलाके हैं जो बिल्कुल सीमा पर सटे हुए हैं, वो हमारी सेना को मदद करते हैं, हमारी सेना को सूचना देते हैं कि यहाँ पर ये एक्टिविटीज है। तो बल्कि अरुणाचल के लोग पर कोई असर ही नहीं पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब से भारत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगा है, तब से उन्हें ये विश्वास भी हो गया है कि चाइना हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और यह जो उनका आत्मविश्वास है, अभी तो अरुणाचल प्रदेश में चुनाव का माहौल है, चुनावी चर्चा है, बावजूद इसके उसमें ये चर्चा भी हो रही है कि चीन जिस ढंग से गतिविधियां करता रहा है, कभी नाम बदल देना, और अभी तो सेला पास के बाद लोगों का, सीमावर्ती इलाकों के लोगों का आत्मविश्वास और बढ़ा है। और अभी जो कल की सूचना आई है, तवांग से बुमला के रास्ते में जो एक लेक है, वहां के बीच में और भी कुछ डेवलपमेंट का काम चल रहा है। लोग सीधा एक पुल टाइप का निर्माण हो रहा है ताकि लोग सीधा वहां तक और सीमा के करीब जा सके। तो जो सीमावर्ती इलाके के लोग हैं, और संयोग से मुझे कई काफी बीहड़ इलाकों का दौरा करने का मौका मिला है अरुणाचल प्रदेश के, तो वहां के जो गांव ग्रामीणों का जो रुख रहा है वो भारत के प्रति रहा है, और बल्कि वो चाइना से घृणा करते हैं। यह मुझे लगता है कि यह बात भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों के लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं, पहले तो सुविधाएं नहीं थी, लोगों को पहुंचने में एक एक सप्ताह लगते थे, लेकिन अब वहां पर सड़क, स्वास्थ्य और इस तरह की चीजें, ताकि भारत सरकार की भी कोशिश यह है कि सीमावर्ती इलाकों में जो गांव है वो गांव में ही लोग रहे, वहां से पलायन नहीं करें। तो इसीलिए अरुणाचल की चाइना की इस तरह की हरकतों का अरुणाचल के लोगों पर कोई बहुत ज्यादा कोई असर ही नहीं। जी, Pathikrit, the fact that the Modi government has renewed focus on the northeastern region, especially the border regions, like you were saying about the Vibrant Villages program, there have been several airports that have been inaugurated or upgraded in the northeastern region in Arunachal Pradesh. Tezu Airport is there, which was inaugurated by PM Modi. Then there was Donye Polo Airport, which was upgraded. And recently, in fact, about 2,300 crores have been also approved for Ladakh-Sarli section on the frontier highway in Arunachal Pradesh. Basically, a lot of, emphasis on infrastructure strengthening in the northeastern region, specifically the border areas. But has this come too late for us to actually start focusing on that? Because China's already been doing that. You look at China, the Indo-China border, if you visit there, Chinese side has, great roads, smooth highways, infrastructure is very nicely built there. Have we been a little too late in realizing that we too need to strengthen our border areas with China? Shreya, you are absolutely right. From 1962 onwards, the policy of government of India during those days was the scorching earth policy, in terms of which there was no development that was done in the border regions, so that even if the Chinese ever come inside, they cannot go much.
Now, that policy was disastrous. What happened is that because of lack of development, you had hundreds of villages getting empty because people were moving towards townships, district townships, or other big cities for the sake of job. Today, as part of Vibrant Village policy, you have massive developmental infrastructure coming up, first by the Border Roads Organization. Second, you are creating all kinds of infrastructure facilities so that people from those places need not go to the cities for the sake of job. And also, at the same time, you're creating major tourist attraction and destinations along the border regions so that large number of people from the hinterland actually go to the border areas for tourism purpose, because the advantage that China had in the past was that villages used to be empty, so it was not very difficult for them to come in. Even if they used to go back, they used to come in and show their dominance. That is completely gone today. Second, the infrastructure projects that Prime Minister Modi has executed in the last 1 decade, many of these projects, Shreya, either were pending, half constructed, or were only on paper for decades. Unfortunately, for the sake of appeasing China, the successive governments in the past was not willing to actually execute that. Likewise, the multiple re-entry vehicle, multiple independent re-entry vehicle, that is the Divyastra Agni 5 missile, which was tested. These capabilities India had in the past as well, but no test used to be done 10 years back or before that, because it would have antagonized China. Today, it has been shown to China, we don't want a war. There are enough opportunity for these two countries to coexist. But if push comes to a shove, we can reach Beijing and Shanghai as well. So I think today you have to speak to China from a position of strength, which India is doing today. And then that's the reason you see China at times is becoming far more easier to deal with than what it was in the past. Yes, certain issues are there. It will be dealt with. But I'll tell you, there will be areas of convergence with China. There will be areas of divergence, and there will be areas of status quo. China knows, unlike in South China Sea, what they do. Beyond the point, it is difficult to meddle and browbeat India, because today's India is different. Had we started, Shreya, 30 years back, what we are doing in the last 10 years, things would definitely have been very different. We would have been a $10 trillion economy today than merely $4 trillion that what we are today. Okay, let me also ask Ravishankar Ravi ji, अब क्योंकि फोकस है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एक ग्राउंड सिचुएशन हमें समझाइए, क्या कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कुछ कमियां अभी भी हमें पूरी करनी है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेसिफिकली द बॉर्डर एरियाज? श्रेया, आपने बहुत सही सवाल किया है। अभी 3 साल पहले ही मैं किबुटू गया था, जो हमारा लास्ट उस साइड में चाइना का जो लास्ट हमारा जो इलाका है। और किबुटू अब में लास्ट नहीं है रविशंकर रवि जी, अब वो लास्ट विलेज नहीं है, अब वो गवर्नमेंट ने बोला है दैट्स द फर्स्ट विलेज, दैट इज नाउ बीइंग टर्म्ड एज द फर्स्ट विलेज। लास्ट से फर्स्ट कर दिया। आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना से आने में जब हम ये करते हैं तो हमारे देश का पहला वो गांव है, पहली जगह है किबुटू। तो जहां पर वहां पर आर्मी वाला ने एक व्यवस्था कर रखी है कि दूरबीन से आप देख सकते हैं आसपास के इलाकों को। तो हमने देखा कि चाइना की बॉर्डर पर बहुमंजिली इमारतें थी, 4 लेन सड़क वहां पर उस पार में है सीमा के, और हम लोग किसी तरह से उस समय सड़क डबलिंग का काम शुरू हुआ है। अब किबुटू तक डबल लेन की सड़क का निर्माण चल रहा था काफी जोर शोर से, वो मैंने देखा। लेकिन जब डिजिटल इंडिया की बात आ रही थी तो काफी दूर तक हम लोग के पास कोई नेटवर्क नहीं था। अब जो वहां पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जो मजदूर हैं उनको डिजिटल पेमेंट करना है, अब वहां नेटवर्क है ही नहीं, एटीएम वहां काम नहीं कर रहा। तो मुझे लोगों ने बताया कि सप्ताह में एक दिन एक ट्रक जाती है नीचे और 40-50 जो भी मजदूर हैं उनका एटीएम लेकर जाती है रोइंग तेजू शहर में, वहां पर फिर वो लोग पैसा विड्रॉ कर लाकर उन लोगों को देते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है बॉर्डर एरिया में, सिर्फ बीएसएनएल के टावर कुछ जगहों पर दिखे जहां पर हम लोगों ने भी अपने घर वालों से या ऑफिस से बातचीत की, तो कनेक्टिविटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और रोड के मामले में बड़ा काम हो रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 10 वर्षों में सीमा इलाकों में, चूंकि मैं बॉर्डर के इलाकों में जाते रहता हूँ, वो मेरा पैशन भी है कि उस तरह के इलाकों में जाना और लोगों की जिंदगी को समझना, तो रोड कनेक्टिविटी का काम हुआ है।
अब कई जगह हमें इसके बॉर्डर बीआरओ के लोग बता रहे थे कि कुछ ऐसे इलाके हैं, नदी को हम लोग सूखे के दिन में ही बड़ी बड़ी मशीनों को पार करा देते हैं, क्योंकि जैसे ही बारिश होगी बड़ी मशीनें उस पार नहीं जा पाएंगी उस सड़क से, जो सड़क की जरूरत है। तो वो सारे काम को करने की जरूरत है, जो अब हो रहा है। ट्रांस अरुणाचल का जो था, अरुणाचल के सभी सीमावर्ती इलाकों को जोड़ना एक सड़क लाइन से, इस योजना की घोषणा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने काल में की थी। उस दिशा में काम हो रहा, क्योंकि सिर्फ आपको हमारी अपनी सेना की ताकत को तो बढ़ाना ही है, लेकिन सीमा पर बसे लोग हमारे लिए सबसे बड़े सुरक्षा प्रहरी हैं। कारगिल में आप देखिए, सबसे पहली सूचना वो भेड़ चराने वाले लोगों ने भी दी थी। बिल्कुल रविशंकर रवि जी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जी। I think people at the border villages are extremely significant. Pathikrit, you wanted to make a point. Please go ahead and then I'll wrap this up. Shreya, two important points. Given the terrains that we have on our side, even to have any developmental work, we have to airlift a JCB machine. So we had a challenge of terrain. And secondly, for a long period of time, unfortunately, every time you go to do a construction work, the environmentalists used to put in litigation. So we faced a lot of problems. Today, many of those issues have been sorted out because you have to create a balance between development and ensuring that a green side of the nature is also maintained. We face certain needling issues from our side, not from the Chinese at times. So I think those issues have been sorted out in the last 10 years. Yeah. You are right. Probably if we had started 10 years, 30 years back, it would have been a different ballgame altogether. But good thing is that at least we have started 10 years back. Things are today far better off. The people in the borders are far more confident today than probably what they were 10 years back. So I think progress has been made. Next 10 years will be a game changer. Right. All right. We'll leave it there. Pathikrit Pain and Ravishankar Raviji, thank you very much to both of you for joining us on Nation Tonight and sharing your perspective and helping us understand what exactly the people of Arunachal Pradesh feel about all of this tussle that keeps happening between India and China. Thank you very much. Let's move on and get